Now this is about new public examination bill. New anti-cheating bill is going to be tabled in the parliament today is what we are learning. As Centre is going to move this particular bill to prevent unfair means in the public examinations and proposes 3 to 5 years of jail in the paper leak cases. More in the case of organized leak as well. We'll bring you more details about this particular bill that is going to be presented in the parliament today. What are the highlights of this new bill, this new anti-cheating bill that we are actually talking about, which is going to be tabled in the parliament today as and when we receive more information on that. But right now, Centre is going to move this particular anti-cheating bill to prevent the unfair means in the public examinations, and in fact has proposed 3 to 5 years of jail in the cases like paper leak case and more in the cases of organized leak as well. We have CNN News 18 senior editor Pallavi Ghosh joining us on the broadcast. Pallavi, a very good morning to you. Could you just tell us more about what exactly this anti-cheating bill is going to be? What are the key highlights from this? It's become a huge issue about the case, and one of the worst stories usually comes out of Kota. All right, I think we have lost connection with Pallavi Ghosh over there. We'll try to reconnect those lines, but right now, let's talk about this new anti-cheating bill which is going to be tabled in the parliament today. Centre is going to move this particular new bill, new anti-cheating bill, to prevent the unfair means in the public examinations is what we are learning. Centre has went on to propose a 3 to 5 years of jail in the paper leak cases, and especially in the cases of organized leak where people are actually involved. All right, we have Congress leader Shanti Dhariwal joining us on the broadcast. Sir, a very good morning to you. Thank you so much for speaking to CNN News 18. This new anti-cheating bill is going to be tabled in the parliament today. What are your thoughts about it? Hello. Hello, sir. Can you hear me? हाँ. जी सर, ये एंटी-चीटिंग बिल जो है सरकार आज लेके आने वाली भाई है सभा में। राजस्थान गहलोत सरकार तो इसको बिल को पास करवा चुकी, ये तो नकल कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो है राजस्थान की जो बिल हमने पास किया था, कांग्रेस की सरकार ने जो पास किया था उसकी नकल कर रहे हैं, उसी पे काम हो रहा है सारा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, लेकिन हालात तो अब कुछ हद तक चेंज हो जाएंगे। अगर भी आप ऐसा कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने पहले इसे राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया, सेंटर तो इसे देश के लिए लेके आ रही है, इसमें खराब बात क्या है? आप पता नहीं क्या है, वो तो वही जब राजस्थान की नकल कर रहे हैं ना, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, सारा का सारा जो बिल जो है पेपर लीक का और पेपर चीटिंग का, ये सारे प्रोविजंस हैं ऑलरेडी हमारे बिल में, जो हमने बिल पास किया है। बिल्कुल, लेकिन सर अब इससे चीटिंग रुक जाने वाली है क्योंकि सरकार ऐसा कह रही है कि 3 से 5 साल तक की जेल पेपर लीक केस में होनी चाहिए। ऐसा है कि सेक्शन आईपीसी में 302 नंबर का सेक्शन है। 302 में हत्या जो होती है उसमें फांसी की सजा होती है, तो भी कत्ल तो हो ही रहे हैं, मर्डर हो ही रहे हैं। तो ये बिल लाने से तो निश्चित तौर पर इसमें है कि थोड़ा सा डर तो बैठेगा, तो चीटिंग करने वाले लोग हैं, लेकिन रुकेगी कि नहीं रुकेगी ये तो एक जो प्रबंध होता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी सरकार किस प्रकार का प्रबंध करती है। पेपर लीक कहाँ नहीं हुआ? क्या मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र में नहीं हुआ? जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें थी वहाँ में हुआ। बल्कि केंद्र सरकार का भी जो है वो एक है वो। शांति धारीवाल जी, आप कोटा के विधायक हैं और कोटा में सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर्स भी हैं और बहुत सारे सुसाइड के केसेस वहाँ पे भी हुए हैं। और मैं सुसाइड केस अलग चीज है, सुसाइड केस अलग चीज है, लेकिन आप मेरी सवाल सुन लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब पेपर लीक होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो घर छोड़ के कुछ असम से, बंगाल से, बिहार से आते हैं और कोचिंग सेंटर में पैसे भी खर्च होते हैं और रहते हैं। कहीं ना कहीं ये आरोप आप लोगों की सरकार पे भी लगा था कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी, और क्योंकि अभी भी हो रही है, सरकार बदल गई तो भी नहीं, बात सुनिए, सरकार बदल गई तो भी जो है 3 आत्महत्या हो चुकी है, वहाँ पर 3 सुसाइड हो चुके हैं। सुसाइड का केस अलग, लेकिन आप लोगों ने पेपर लीक और पेपर की चीटिंग चीज अलग चीज है, दोनों को मत मिलाइए। पेपर लीक मामले पे ये एक चुनावी मुद्दा बना था क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही देरी की थी कोई भी कानून लाने के लिए। क्या आपको लगता है कि देर हो गई थी तब आपकी सरकार से के लिए देरी की? आप हमारे टाइम पे उससे भी ज्यादा पेपर बीजेपी की शासन के टाइम पे लीक हुए।
तो बिल्कुल ही हमने कुछ तो आप किया। लोगों ने ये कानून, शांति धारीवाल जी, ये कानून की बात आप लोगों ने तब की जब ये चुनावी मुद्दा बन गया था, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा था बीजेपी का। उसके पहले कर चुके थे, गलत कह रहे हो आप। चुनाव के पहले कर चुके थे हम, चुनाव से काफी महीने पहले जो है ये बिल पास कर चुके थे, जब तो ये मुद्दा था ही नहीं। अच्छा शांति धारीवाल जी, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इतने सारे कोचिंग सेंटर्स खुलते हैं और फिर एक तरह का बिजनेस भी बन गया है, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूं, पर कोई भी राज्य, मैं कह रहा हूँ आपको, कोचिंग सेंटरों को क्यों जोड़ रहे हो आप इससे? कोचिंग सेंटरों में कभी कोई जो है क्या में चीटिंग हुई है क्या? स्टूडेंट्स तो वहीं जाते हैं नीट के एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। पेपर लीक दूसरे हुए हैं उन लोगों से। ये पेपर लीक हुए आरपीएससी के और आपके इसके क्या नाम चयन आयोग के जो पेपर थे वो लीक हुए हैं। अच्छा शानंद, मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करूंगी, बाकी राज्यों में क्या आपको लगता है जो कमर्शलाइजेशन हो गया है इन एग्जाम्स का, इन एजुकेशन, क्या वो भी एक कारण है जिसके चलते पेपर लीक होता रहता है? निश्चित तौर पर कमर्शलाइजेशन तो हो गया और पेपर लीक की घटनाएं न होती हैं, हर राज्य में होती हैं, हुई भी है। तो आपको लगता है कि जो कानून अब लोकसभा में आज अच्छा है, कानून लाना तो अच्छी बात है। हम तो ला चुके हैं, ये ला रहे हैं, ये भी अच्छा है, हम कोई उसकी बुराई नहीं कर रहे। तो आपको लगता है कि इससे कोई असर पड़ेगा या 3 से 5 साल का जो पनिशमेंट दिया जा रहा है वो काफी है? लोग जी, अपराधियों में डर तो बैठता ही है ना, कम से कम तो लाना चाहिए ऐसा कानून, इसीलिए हम लाए। ओके, थैंक यू वेरी मच. Speaking to CNN News 18, Sakshi, let's go back to you. Shanti Dhariwal, and he is a MLA from Kota, and the maximum number of coaching centers are actually in Kota, and we all have heard of it. In fact, when I had gone to cover elections in Rajasthan, I had seen myself that their students, because of paper leaks, they were sitting in coaching centers for years after years, and some of them actually had come in from a very, very poor background. And many of them kept on waiting for their results to be out, or because the papers and examinations are put on hold. And this is something which this new bill, which the government is going to be tabling later today in the Lok Sabha, is something which is going to try and target the young students and all those aspirants for these important competitive exams like NEET and IIT. Definitely, Pallavi. And a couple of days back, we were also talking about how Modi government is right now trying to focus on the Nari Shakti as well as the youth. This is going to change a lot of things for the younger section of the society because of the paper leak cases that have been happening in the past and the kind of delayments in the re-examinations that used to take place and the disruptions in the study of the youth which used to happen. Pallavi, but in the matter of Lok Sabha elections, how is that going to give a certain sort of a push to the BJP government? How are they going to take the lead if this anti-cheating bill is passed in this session today? Well, I think it's going to just push forward the government's narrative and the BJP's narrative that this is a government which feels for the younger people. I mean, they're first-time voters, they are aspirants, people who don't have an entitled lifestyle. Because, I remember when I went for Rajasthan and I went for Rajasthan elections and to Jaipur, and I'm talking specifically about Rajasthan here, though there are cases of paper leak coming up in other states like Madhya Pradesh as well. What happened is that everyone wants a government job because of the security it also gives you. And there were students who were staying in coaching centers. Some of them had come in from far-flung areas. Not everyone was very rich. Some of them have stories I was told about people who had, the family had sold off their family land and so to say taken loans. And then they were waiting in a sense of uncertainty because their paper had been leaked. I think it is this section of the people which the government is going to try and target. The BJP is certainly going to reach out to make the point that this is a government which feels for the younger population, people, the aspirational population, many of them who do not come in from a very rich background. Definitely. And Pallavi, since you asked the question of the coaching centers and the commercialization of the study that has happened specifically in the state of Rajasthan also, because you have covered that in the past for the Rajasthan election, how do you think this particular anti-cheating bill is going to change a lot of things in the commercialization of the education business that is currently being played out in our country? Sakshi, in many of the areas I, for example, visited in Rajasthan, I found that many of the coaching centers, and some of them are thriving, did have political backing. To that extent, the commercialization runs deep. You just have to travel to Kota, for example. It's part of cinema, it's a part of
OTT platform movies as well. You just drive through Kota, and what really dots the skyline are several coaching centers and the ancillary industry. There are hostels which come up, there are food joints which come up. So it's an entire industry which also unfortunately is on the bedrock of uncertainty. So when Shanti Dhariwal says that it is actually going to put a scare among the people, how do you explain the fact that many of these centers do have political backing? And unless you don't go to the roots of this political backing, I don't think that the commercialization of education which is taking place in many places can actually come to an end. Definitely.